So India is taking on Pakistan after 4 years in a big ODI match. It is undoubtedly a high voltage match. There will be high voltage drama, and when India meets Pakistan, as we all know, as you know, there is always massive tension, and it's good fun at the end of the day. But I want to begin with 3 points before I go over to my friend CS. So the first point is that the gap between India and Pakistan in cricketing terms has narrowed down considerably. It's not like before. That is point one. Second is, in a big match, it is temperament which is more important than form, because there are people who can raise their game amazingly, and we've seen that happening repeatedly in the past. And the third point is that India start as favorites. So we go over to CS in a while. So CS, the first point, the gap has narrowed. Do you agree or you disagree? Yeah, rather I was hearing your 3 points, but I'll begin with the last point, that India start as favorite. I don't think so. The kind of form Pakistan is in, it is not going to be any easy ask for India, for the simple reason that we are going through again experimentation. We don't know about our number 4. We don't know about the fitness of Shreyas Iyer. We have already seen how KL Rahul has slapped his own selectors by declaring himself, unfit. And also, Bumrah has not bowled 10 overs ever since he has come back. So, India is not a favorite. It could be 50-50, or rather, Pakistan is favorite. So now we go to इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घर से निकलें तो कुछ मुंह ढक के निकलिएगा क्योंकि लोग आपका इंतजार करेंगे. Anyway, point taken. Second point, temperament. Temperament, definitely. I think India and Pakistan is a pressure cooker situation. अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट एक 100 करते हैं या एक मैच विनिंग नॉक या एक अच्छा बॉलिंग स्पेल करते हैं तो आप ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं. ये सब चीजें तेंदुलकर ने, अगर आपको याद हो, वो छक्के जो अब्दुल कादिर के अगेंस्ट मारे थे, वहां से वो स्टार बने थे. ये ही सब मेक और ब्रेक गेम्स है. इसमें टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है और कैसे प्रेशर को आप लेंगे, क्योंकि एक दूसरे को जो गाली गलौच होता है ना, जिसको हम स्लेजिंग कहते हैं, प्योर गाली गलौच होता है, वो बड़ी अच्छी अच्छी गालियां देते हैं, वो भी पंजाबी में, हम लोग भी उनको वापस करते हैं. तो इसलिए इट इज नो मोर व्हाइट वर्सेस कि हम ब्राउन्स के अगेंस्ट मैचेस. इसमें गाली गलौच, पंजाबी पूरा एक्सेंट और रादर इवन गुजराती वाले एक्सेंट, ये सभी चलते हैं. तो इट्स मोर ऑफ ए टेम्परामेंट देन द फॉर्म. सीएस, एक पॉइंट और आना चाहूंगा जल्दी से, वो ये है कि लोग खासतौर से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉर्म तो अपनी जगह है, कुछ प्लेयर्स हैं जो बेहतरीन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन टेम्परामेंट एक ऐसा शब्द है जो बार बार प्रयोग किया जाता है और इस सेंस में किया जाता है कि जब कोई बड़ा मैच होता है, सो टेम्परामेंट कम्स इनटू प्ले. अकॉर्डिंग टू यू, with all your cricketing knowledge, what is the difference between form and temperament? Look, form is purely your technique and also how you have been faring in last couple of matches, or rather in a season. So that form always carries you and also gives you a confidence that you are going to do well against any of the opponents. But when it comes to temperament, it is about how you are, sleeping before a night, that night before the match, against, whether it is against Australia, a tough game, we all know, or against Pakistan, where आपके टीवी स्क्रीन तो हम मजाक करते हैं, 6 फोड़ते हैं पुराने टीवी, लेकिन पॉइंट इज आपका करियर खत्म हो जाता है. बिशन सिंह बेदी, ग्रेट लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको 32 साल में उनका करियर खत्म हो गया था, जबकि ब्लूम करते हैं स्पिनर्स उस एज में. तो उनको ना केवल कप्तान भी रहना चाहिए था और बड़ा करियर, लेकिन एक बुरी सीरीज उनकी पाकिस्तान में और करियर खत्म. तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपकी रात को नींद कैसे आई, आपके दिमाग में क्या चलता रहा. बड़े से बड़े प्लेयर, नाम लेने की जरूरत नहीं, हर एक व्यक्ति ने एडमिट किया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ, पाकिस्तान का एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है. रात को आपको थोड़ा अपने आप को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा शायद योगा की तरफ, ज्यादा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और जो साइकेट्रिक की जरूरत पड़ती है, जो साइकोलॉजिस्ट हमारे से टीम के साथ चलते हैं, उनका काम, उनका रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल के बच्चों को काम डाउन करने का. CS, you mentioned about Bishan Bedi. I remember as a teenager watching that series, and it was very, very gut-wrenching to see the way our spinners were taken apart by Imran Khan, by Zaheer Abbas, by Asif Iqbal. All of them really tore our spinners apart, and like you said, ended a lot of careers. Let's move on. Since then and now,
particularly in the mid 80s and 90s, India was quite leagues ahead of Pakistan in many ways, but now they are saying that the gap has narrowed, and primarily it has got to do with the quality of their fast bowling. They never had any dearth of fast bowlers ever, and possibly their fast bowlers are much superior than the Indian fast bowlers. But now they have three trump card fast bowlers who can move the ball. Their overall fielding has improved dramatically, as we saw them play against England, although they lost the series, and the batting level led by Babar Azam has also improved. How much do you think this gap has narrowed? I think look at the kind of talent they have been getting. We started with Imran Khan time when he picked these two guys, Waqar and Wasim Akram from nowhere, and suddenly they became the champion bowlers. But now in between, yes, there was a crisis situation, and especially around 2009 when that whole incident happened with the Sri Lankan team. I think उसके बाद इनकी क्रिकेट मर गई थी और सबने मारा भी. हम सब ने मिल करके इनको आइसोलेट किया रादर देन इनको हाथ पकड़ना और जो कहते हैं ना कि कोशिश करनी. दैट वाज ऑल पॉलिटिकल रीजंस, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. लेकिन उसके बाद सडनली पिछले 2-3 साल में, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यूज पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान में भी टीम जा रही है, ऑस्ट्रेलिया गई, इंग्लैंड गई, तो इन टीमों की वजह से वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और सडनली वो रॉ मटेरियल जो पुराने लोग जैसे आज शाहीन अफरीदी हैं या नसीम शाह हैं या ये सभी लोग रॉफ की बात करें, ये ठीक वैसे आ रहे जैसे वकार यूनिस और अकरम आते थे. अगर आज की डेट में इफ यू आस्क मी हु इज द मोस्ट फियरसम बॉलर विद द वाइट बॉल, लेफ्ट आर्म बॉलर, मुझे लगता है कि नसीम अफरीदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता इतनी अच्छी बॉल के साथ कारीगरी करने वाला, और अफरीदी के अलावा. और नसीम शाह का अगर आप एक्शन देखें, इससे डिलाइट टू वॉच. और इनको मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अकरम और वकार की जोड़ी बन सकता है अगर इनको अच्छा एक्सपोजर भी मिले, लगातार खेलने भी, और जो फिटनेस की प्रॉब्लम है खासकर आफरीदी के साथ, उससे उनको उठना पड़ेगा. Okay, let's move on to the fast bowling trio of Pakistan, as CS has been talking about, and that they are fearsome. And over and above, when we use the word fearsome, it is about the pace they generate, it's about the technique and the strategy that they have against top batters, and of course the movement, because if a fast bowler cannot move the ball at this level, then they are pretty ineffective. So the Pakistan bowling trio is basically Shaheen Afridi, Haris Rauf and Naseem Shah. And what did our skipper Rohit Sharma have to say when he was asked that how are you going to deal with the swinging ball? So this is what he said, and I quote, he says, "We don't have Shaheen, Naseem and Rauf in the nets. We practice with what we have. All three are quality bowlers. Pakistan always has had quality bowlers. We have seen their strengths and weaknesses. We will use our experience against them." CS, those are nice words, and maybe he's being a bit sarcastic also. But at the end of the day, if they clean up three of our top batters, then we are in big trouble. Definitely, if you look at Champions Trophy match, 2017 or 2019 World Cup match, where we won by a big margin, we got 336 or something, and Rohit got 140 runs. Look at that, there the main issue was Pakistani bowling against Indian batting. That was the time Babar Azam and all, they were coming up, they were doing well, but again, they were not the world class. But right now, the gap has narrowed down. Their batting is as formidable as Indian batting. Rather, Indian batting has now changed. Rohit Sharma is not in the best of his form. Virat Kohli has come back, but again, his form is not the same which we used to see, And then rest all, whether it's Shubman Gill or Suresh Iyer coming back, they all will be tested against Pakistan, and playing against Pakistan is कोई जोक नहीं हो सकता, और उनको खेलना ही पड़ेगा. और अगर आपका टॉप ऑर्डर में से खासकर अगर रोहित शुरू में जल्दी निकलता है, तो शुभमन के बाद वन डाउन में मुझे लगता है विराट को ही भेजेंगे. विराट और वो बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि दोनों का खेलने का स्टाइल है. Yes, let's talk about Team India, because I don't want us to suffer like Harsha Bhogle, because he concentrated more on the rivals, and then we all know how Dhoni and Bachchan got after him. So let's talk about Team India in the right spirit, and India will win. India are the favorites. I completely disagree with CS. So let's talk about the team. So CS, Rohit Sharma captain hai, Hardik Pandya vice captain hai, Shreyas Iyer is coming back after a pretty long layoff. Then you have Sky. KL Rahul is again not playing the first two matches. Ishan Kishan might come in. And then, of course, the tested names are there. Virat Kohli, Shubman Gill. Are we going to punt with Tilak Varma? So these are more or less the batters. What do you think?
I think if I'm the captain, I'll go with Tilak Verma for the simple reason he's lefty. He's very formidable. I mean, look at his form in the last couple of games. He's being very attacking and also very technically quite correct. I would say he's not 100%, but very correct. Better than Ishan Kishan or better than, for that matter, Shreyash Iyer. सो मुझे लगता है वो चांस ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी जो मुझे लगता है कि नंबर 4 की स्लॉटिंग में मुझे लगता है सूर्य कुमार को वहां पर चांस देना चाहिए। ये उनकी लाइफ का लास्ट हो सकता है कपल ऑफ मैचेस हो। अगर वो अच्छा करते हैं तो वर्ल्ड कप के सबसे बड़े प्लेयर भी होने वाले हैं और वहां पर उनकी सबकी नजरें उन पर रहेगी। अगर वो फ्लॉप होते हैं तो ये उनका एंड ऑफ द करियर होगा, स्पेशली इन ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, और इसके बाद सिर्फ टी20 वो खेलेंगे। तो उनको जब जब चांस भी देना है और जो कॉन्फिडेंस भी देना है, तो नंबर 4 जहां पर आपको प्रॉब्लम है, स्काई को लाइए और लेट्स टेस्ट हिम एंड लेट्स probably get the best out of him because he's a great player otherwise. CS, we have a question coming in from Mudit Kumar, and the question is, will King Kohli make 100? Not at all. I mean, this is not a format where we can always say, 100 or rather, I would say best situation is that our top order, especially the two openers, Rohit and Shubman, they play as many overs because they have to see these 10 overs of Shaheen Afridi, especially 5 to 6. If he doesn't get wicket, then obviously he could be replaced in 4 and then come back for 2 more spells. But we have to see his bowling and also we have to take care of the other 2 players. व्हाइट बॉल नई ज्यादा घूमती है, सबको मालूम है, और वो घूमती हुई बॉल को, खासकर जब आप कैंडी में खेल रहे हैं, ये मत भूलिए वहां पर बिल्कुल साथ में आपके सी साइड भी है थोड़ा दूरी पे, तो बॉल की स्विंग जो ज्यादा होती है नॉर्मल, बेटर देन जो इंडिया में आपको एक्सपेक्ट होता है। सीएस, आपने स्काई की बात करी और मुझे अभी भी याद है कि आईपीएल मैच के दौरान मैं कहीं गया था शाम को कुछ सामान खरीदने, तो वहां पे जो स्टोर क्लर्क था वो मैच देख रहा था और उसने कहा, सडनली घूमा मेरी तरफ, फिर कहता है ये जब तक स्काई फॉर्म में है टी20 में इससे बेहतर कोई है नहीं, लेकिन आगे पता नहीं क्यों नहीं चलता। तो उसी का सवाल मैं एक्सट्रापोलेट करता हूं कि उसको ओडीआई में क्या दिक्कत आ रही है आपके हिसाब से? कोई टेक्निक प्रॉब्लम? देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये सब क्या है, कई बार बोल बोल के भी हम किसी को तो पहलवान बना देते हैं, किसी को खत्म कर देते हैं। स्काई के साथ प्रॉब्लम है कि बाय द टाइम ही गॉट ए अपॉर्चुनिटी इन ओडीआई और टेस्ट में तो खैर छोड़ दीजिए, ओडीआई बहुत लेट हो गया था। वो टी20 के बादशाह बन चुके थे, उनकी टेक्निक, वो इम्प्रोवाइजेशन, उल्टे सीधे शॉट खेलने, उनको तो ये समझना पड़ेगा कि हर शॉट को हर फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। इट्स वेरी सिंपल। आई रिमेम्बर सिडनी में जब सेंचुरी की थी तेंदुलकर ने, तो उन्होंने एक चीज आकर के बोली थी कि मुझे एक चीज समझ आ गई थी, मुझे कवर्स पे उठा करके नहीं खेलना, मुझे बिल्कुल, अगर मैं खेल लूंगा तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। तो पूरा दिन कवर्स पे वो खेलते रहे और सिंगल्स और 4 भी ज्यादा ट्राई नहीं किया। तो ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, यू आर द बेस्ट बैट्समैन आफ्टर डिविलियर्स इन द टी20। नाउ गो देयर एंड प्ले द रेगुलर क्रिकेटिंग शॉट, और जब आप खेलोगे वो, और लास्ट के मे बी 5 और 7 ओवर्स में अगर इफ यू हैपेंस टू बी देयर, देन यू प्ले ऑल काइंड ऑफ जगलरी, कोई nobody can stop you. So that's why I'm saying give him confidence, put every penny of your team on Sky and Sky. give him number 4 chance. Okay, so Sky needs confidence, and there's a question from Chandana Singh that will Haris Rauf be effective against Virat Kohli? What do you think? Well, if I remember correctly, last time he's troubled Kohli. And Rauf also troubled. Of course, Shaheen ने शुरू के विकेट्स लिए थे, but yes, he's been a great bowler. मतलब कि ऐसा नहीं उसमें प्रॉब्लम, एंड प्लस उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो बाकी 2 बॉलर्स में कम है, इनका चेंज ऑफ पेस। राउफ हमेशा थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस में आपको थोड़ा सरप्राइज करते हैं। शाहीन सबको मालूम है, प्रेडिक्टेबल है, बहुत अच्छी बॉल करेंगे, बिल्कुल बैट एंड पैड मिला करके रखिए, उनको छोड़ने की खासियत रखे। लेकिन नसीम शाह एक प्रिडिक्टेबल है, उनका आउटस्विंगर बहुत अच्छा चलता है, एक्शन बहुत प्यारा है, लेकिन राउफ आकर के आपको सरप्राइज करते हैं विद द बाउंसर, विद द स्लोअर वंस एंड आल्सो विद द चेंज ऑफ पेस। Okay, let's take a quick look at the Indian bowling attack, the potential bowling attack. So the names basically are Akshar Patel and Ravindra Jadeja. We know what they can do, but who will be played remains the question. Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Prasidh Krishna, Shami Siraj, and Bumrah. Bumrah, we've already spoken about the fact that he's still, there's a question mark over his fitness. So whether he would be pushed through in this match or not remains to be seen.
But what about the pace and spin attack, CS, and also keeping in mind the conditions in Sri Lanka? It is sluggish. It is horribly humid. 90 to 95% humidity has been predicted as per the weather report. Look, if the humidity is above 90%, let me tell you, I won't be surprised if Pakistan rests or probably doesn't declare, Shaheen Afridi, fit. Because you can't take chance with such a big bowler. And especially after what we have seen in last match. After 5 overs, he was almost, out of his breath. So, I mean, that's my hunch. एंड सेकंड इंडिया की तरफ से मैं तो यही कहूंगा, देखिए आपको हार्दिक पांड्या आपके पास एक बॉलर है जो नंबर 5 नंबर 6 की तरह यूज हो गए। एज ए ऑलराउंडर स्लॉट पे आपको रविंद्र जडेजा मुझे लगता है बिल्कुल खेलेंगे। सो नाउ दैट कम्स टू आप 2 पेस बॉलर्स के जाओगे या 3। इस कंडीशंस में आप 2 से ज्यादा पेस बॉलर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर क्योंकि मुझे लगता है इस कंडीशंस में कुलदीप यादव का खेलना मुझे सर्टेन लगता है चाइनामन और प्लस स्लो बॉलिंग उसमें, और थोड़ा सा शायद जब कहते हैं ना कि कंडीशंस इतनी खराब हो फील्डर्स के लिए भी बैटर्स के लिए भी, तो मुझे लगता है उनका खेलना इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स इज फर्स्ट टू पेसर्स। बुमराह इज ए सर्टेनिटी, उनको खिलाएंगे भी, टेस्ट भी करेंगे। सेकंड में मुझे लगता है सिराज और शमी के बीच में टेस्ट है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा मुझे नहीं लगता यहाँ खेल पाएंगे। तो ऐसे में जो टेस्टिंग टाइम होगा, आई विल एज ए कैप्टन विल गो विद शमी, ट्राइड एंड टेस्टेड। बट यस, इन द रिसेंट फॉर्म Siraj is equally good. So there is a toss-up between Siraj and Shami. So you're basically saying that 3 pacers and 2 spinners should do the job for India? No, 2 pacers and I mean third pacer will be Hardik Pandya for that. Right. Two mainstream pacers and then probably rest 3 spinners kind of. I mean, there is another question from a viewer, Saurabh Bharti. He says, what is the possibility of rain? Now, before you answer, the weather report basically says that the humidity will be around 95 to 98% through the day in Kandy in Sri Lanka. The temperature will hover around 22 to 23 degrees, which isn't bad. But like we are repeatedly saying, that humidity can take a massive toll on fast bowlers, also on the fielding. The cramping begins, so we have to worry about that. And both teams, CS, must play at least 20 overs before the DLS Duckworth-Lewis method kicks in. So while we are not weather pundits, but if there is rain, then what happens? That obviously, there is possible. Again, if 20 overs are not completed, then points will be split, number one. And there is every possibility India could play, thrice in this championship against Pakistan. One here, and then because Nepal and other team is there, so India and Pakistan can go through in the Super 4. They can again play one, and if they reach final, then the third time. But the possibility of rain is so much that initial period, because the time slots, there are 3 times when the rain could come. So initially it is during the toss time. So it could be, delayed. The beginning could be delayed, and then possibly you will have more than 20 overs. Okay, let's move on to the stats, and stats never lie. So India versus Pakistan Asia Cup head-to-head. So this is the 16th edition of the Asia Cup, and it first began in 1984. So India and Pakistan have faced each other 13 times. 13 बार India और Pakistan खेला है Asia Cup में, और इसमें India is leading the race with 7 wins. Pakistan has got 5 wins, so we are ahead. There was no result in one. But in the 14 matches that the two sides played between 2010 and 2020, India won 10. The two sides, and these are broad stats for our viewers, both India and Pakistan have faced each other 136 times in ODIs, with Pakistan winning 73 times, India winning only 55 times. And in bilateral ODI series, in 17 bilateral ODI series that were played until 2013, Pakistan won 11 while India won just 5. So what I want to recap is that moving aside, ahead of the Asia Cup, if you look at the other stats, 136 बार इंडिया और पाकिस्तान ओडीआई खेला है, जिसमें पाकिस्तान ने 73 बार जीता है, और बायलैटरल ओडीआई सीरीज जब भी हुए हैं 17 बार 2013 तक, उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई, पाकिस्तान 11 बार जीता है, इंडिया सिर्फ 5। सीएस आंकड़े क्या बताते हैं आपको? आंकड़े बहुत क्लियर बताते हैं। 2009 तक जब तक उनकी क्रिकेट ठीक थी, बढ़िया खेल रहे थे, एंड स्पेशली जो एक जनरेशन थी उनकी इंजमाम उल हक के आसपास तक,
उनकी टीम बहुत फॉर्मिडेबल थी और वनडे में बहुत अच्छी साइड थी। 92 वर्ल्ड कप एक इसकी एक मिसाल है। और हम अच्छी साइड होते हुए भी उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं फॉल्टर करते थे इन बायलैटरल। और आईसीसी में हमने हमेशा अच्छा किया, सिर्फ एक बार हारे हम आईसीसी ट्रॉफी में। तो उस लिहाज से वो स्ट्रगल करते थे आईसीसी में, हम स्ट्रगल करते थे बाकी सीरीज में। 2009 ऑनवर्ड्स उनकी क्रिकेट गिरी और हम कम भी खेले लेकिन हम ज्यादा जीते। और अब वो क्रिकेट का वो दौर है जहां पर हमारी टीम में ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि 50-50 है दोनों टीम में। दोनों की बैटिंग अच्छी है, दोनों की बॉलिंग अच्छी है। लेकिन हाँ, हमारे प्लेयर्स की हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है उनके मुकाबले खासकर। I want to hit another point, which is based on an anecdote, a couple of anecdotes, and uh, I was part of a couple of cricket shows in the past where it was very fortunate to have Waqar Yunus as part of that panel, and Ajay Jadeja, all these people were there. We had great conversations. Then later on, Ijaz Ahmed came down from Pakistan. Both of them said कि यार बड़ा मजा आता था इंडिया के साथ खेल के। एंड ऑफ द डे हम लोग एक ही साथ एक कमरे में बैठते थे, हंसी मजाक होता था और बहुत कुछ होता था जो मैं कह नहीं सकता ऑन एयर। लेकिन यारी दोस्ती थी, यारी दोस्ती है अभी भी। जब वो मिलते हैं बहुत याराना होता है। मुझे याद है वकार और अजय जाडेजा तो केवल पंजाबी में ही गल करते थे। तो दिस एंटायर हाइप, अदरवाइज दिस एनिमोसिटी, हेट्रेड, jingoism on social media, I feel it is a bit misplaced. What do you think, CS? एब्सोल्युटली, आई थिंक प्लेयर्स के लेवल पर कोई हेट्रेड नहीं है। प्लेयर्स के लेवल पे बहुत अच्छी दोस्ती है, कहीं भी मिलते हैं। किसी आईसीसी ट्रॉफीज में अगर किससे सुनो, हमेशा प्लेयर्स एक दूसरे को जो कहते हैं प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं अपने। इवन गियर्स, आपके बैट बॉल, ये सब कई चीजें, आप टी शर्ट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। और जो ये हेट्रेड या जो भी जो एनोनिमसिटी जो हम बात करते हैं, ये सब कुछ एक पॉलिटिकल लेवल पर है। इसको क्रिएट किया गया। मैं हमेशा बार बार मानता हूँ क्रिकेट डिप्लोमेसी ने इन दोनों देशों को बहुत पास ला करके रखा। देयर इज ए नीड फॉर क्रिकेट डिप्लोमेसी अगेन, rather than counting your votes, or rather than creating this atmosphere of a hatred between the two countries. Let's begin the cricket diplomacy with the upcoming World Cup. If Pakistan is coming to India, why can't India go there? There should not be any kind of pressure. There should not be any kind of politics in this. I totally agree with you. And at the same time, whatever the political parameters are, that should be kept separate. And the end of the day, if you are playing, if there's any kind of India-Pakistan sporting contact, then it just negates the point that why can't. और अरूप, ये मत भूलिए, पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया। पाकिस्तान is coming to India despite the fact India refused to go to Pakistan for Asia Cup. एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान की थी, जो हाइब्रिड किया गया इंडिया की प्रॉब्लम की वजह से। तो पाकिस्तान ने अगर पहला दौर कहें पॉलिटिकल, जो भी कैलकुलेशंस और जो कुछ होता है, हम तो पॉलिटिशियंस नहीं है, तो पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया छोटा नेशन होते हुए भी। तो अगला बड़ा दिल या अगला बड़ा स्टेप लेने की बात अब भारत की है। So let's begin this cricket diplomacy. Let's begin this rivalry. This could be bigger, much bigger than the Ashes series. सबसे मुश्किल सवाल अब शालिनी सिंह का आया है और उनका सवाल ये है कि स्कोर प्रेडिक्शन क्या रहेगा, तो बताएं क्या रहेगा। देखिए, श्रीलंका में जिस तरह की ह्यूमिडिटी है, आप सिंगल को 2 और 2 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। आई हैव डन ऑलमोस्ट 4 सीरीज इन श्रीलंका, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। और आपको दूसरा जो अब तो खैर आपके साथ फिजियोज ये सब इतने हैं ट्रेनर्स, आप हाइड्रेट रहते हो। आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी भी पीना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, केला खाते रहना, ये सब चीजें करते रहनी अगर आपको क्रैम्प से बचना है। तो उस चीज को लिहाज में रखते हुए मुझे लगता है कि ये 250-275 के बीच की गेम्स, इससे बड़ी गेम्स नहीं है। ये 300 वाली गेम्स श्रीलंका में होनी इंडिया पाकिस्तान के हाई प्रेशर गेम में मुश्किल होती है। Last point, CS, and that is coming from Ravi Shastri. So he said that the Pakistani batters need to emulate basically Babar Azam, who converts the 30s and 40s into big hundreds. Mind goes back. I watched once an interview of the great Donald Bradman, who said that if you get a 50, why can't you score 100? So, well, he was Don Bradman. But Shastri is making a point. And the next one he makes also is on fielding. So he believes that from 1996, Sri Lanka have been the best fielding side in the subcontinent. How important will these two factors be? देखिए, फील्डिंग एनी डे बिकॉज ऑफ द आईपीएल, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपोजर टू T20,
I think T20 has only given you one thing, that is improvement in fielding. तो इंडिया हैज डन दैट ट्रेमेंडसली. पाकिस्तान क्योंकि कम खेलता है और पाकिस्तान का एक्सपोजर इन आईपीएल और अदर लीग्स आर लेस, सो वी हैव सीन पाकिस्तान हैज इंप्रूव्ड लीप्स एंड बाउंड, बट अगेन एज कंपेयर टू इंडिया दे आर नोवेयर इन फील्डिंग, वन. एंड सेकंड, जो रवि शास्त्री बोल रहे थे, एब्सोल्युटली, जो बड़े प्लेयर है ना, चाहे विराट कोहली हो, बाबर आजम हो, रोहित शर्मा हो, इनके 50 के बाद अगर ये 100 करते हैं ना, बहुत डायनेमिक होता है. रोहित शर्मा का लास्ट मैच जो 2019 की मैं बात कर रहा था, वर्ल्ड कप की, 140, सडनली आपको मैच ही खत्म कर देते हो. आपने जब 300 से ऊपर स्कोर लगाया, रोहित के 140, आपका कंपटीशन खत्म हो जाता. तो इसलिए बाबर आजम से भी बच के रहिए. उन्होंने नेपाल के सामने दिखाया, खैर बहुत खराब साइड थी उनकी बॉलिंग भी, लेकिन उनकी फॉर्म, और दूसरा ये मत भूलिए उनके जो फकर जमान है, जो ओपनर है, अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म अच्छी नहीं पिछले 7 मैचेस में. अगर वो भी फॉर्म में आते हैं और बाबर आजम मिल करके करते हैं, बहुत ही अच्छी साइड, एक अच्छा कंपटीशन होगा, एक अच्छा साइट होगा सभी के लिए. Okay, let's wrap the show on that. And again, I would like to basically end the show on the 3 points that we discussed. And those 3 points basically is that the gap between India and Pakistan in cricketing terms has narrowed down considerably. Temperament in a big match is very, very important, even more important than form. And India start as favorites or not. So CS says no. I feel India still start as favorites, but we'll find out in a while. And we hope that rain doesn't play spoil sport. And to both the teams, goodbye and good luck.